या हेलो एवरीवन। एंड हमारा परमुटेशन हम लोग देख रहे थे। परमुटेशन में हमारा एक लेक्चर हो चुका था। ओके, एक लेक्चर हो चुका था। एंड इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो परमुटेशन फैक्टोरियल के बारे में देखा था, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास था और फैक्टोरियल के बारे में देखा था। हमने देखा था फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल को कैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, तो चलिए आज उससे आगे चलते हैं और फैक्टोरियल के कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम ये थ्रू आउट, ये आपको, ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इस पे आपका बेस जो है, बेस मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। या so like we have another question that convert products into factorials. Okay, क्वेश्चन है हमारे पास, convert products into factorial. Okay, into factorials, like we have 6 into 7 into 8 into 9 into 10. Okay, so we have to convert it into factorials. So what we can do is that we simply multiply 1 2 multiply numerator and denominator by 1 2 and 3 and 4 and 5. So we can write it as 1 into 2 into 3 and 4 and 5. Okay, and 7 8 9 6 7 8 9 and 10. Okay, and we have to put 1 2 3 4 4 and 5 in denominator also. Okay, now we can write numerator as 10 factorial and denominator as 5 factorial. Okay, so this is the answer. Yeah, so इतने लंबे को ना लिख के मैंने ये लिख दिया, लेकिन ठीक है। And if we take another example, then we can take, like if we have 2 4 6 into 8 into 10, and how we can convert into factorial, we can simply write it as 2 into 1. Okay, and 2 into 2. Yeah, and this is 2 into 3 and 2 into 4 and 2 into 5. Yeah, we can simply take 2 common from each of them. So we have 2 to the power 5 into 1 2 3 4 5, and we can write it as 2 into 5 factorial. Yeah, this is the answer. Now let us take another example. We have, find the LCM of 4 factorial, 5 factorial and 6 factorial. Okay, so how we can solve it? We have 5 factorial equal to 5 into 4 factorial. Okay, and
6 factorial equal to 6 into 5 into 4 factorial. Okay. Therefore, LCM of 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial equal to we can write it as LCM of LCM of 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं LCM of 4 factorial, 5 into 4 factorial and 6 into 5 into 4 factorial equal to 4 into 4 factorial into 5 into 6. Yeah, we can write it as, and we can simply write it as 6 factorial. And what is 6 factorial? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So इसको आपको याद रखना होगा कि 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है, बट मैं यहाँ पर ऐसे बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ टर्म तक आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 10 तक तो याद रखना ही है आपको। वो याद हो जाता है, वो क्वेश्चन सोल्व करते ही याद हो जाता है। सो दिस इज 30, this is 12 and 2, 30 into 24, 720। ओके, तो ये 720 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक सवाल है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक इफ 1/9 factorial plus 1/10 factorial equal to x/11 factorial. Okay, find x. So we have to find x, and this question is very easy. Let's calculate it. So solution, if we take solution, we have 1/9 factorial plus 1/10 factorial equal to x/11 factorial. Okay, implies 1/9 factorial plus 1/10 into 9 factorial. We can write it like that. Okay, now x by 11 into 10 into 9 factorial. Yeah, now we can take common 1/9 factorial from this, and we have 1 plus 1/10. Similarly, we can take common from this 11 into 10, and we can write it as 1/9 factorial, and we can cancel out from each side. When we can cancel out 1/9 factorial from each side, and then we have 1 plus 1/10 equal to x by 11 into 10. Yeah, and this is, what is this? 10 plus, yeah, 11/10 equal to x by 10 into 11, and we can cancel out 10 also. So simply x is equal to 121, but yeah, let's calculate it. We can write it as x equal to 11 into 11 equal to 121. Yeah, ऐसे हम इसको solve कर सकते हैं. We have another, let's take another problem question, like find n if
n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 into n factorial. We have n+2 factorial equal to 2550 into n factorial. Yeah, and we can simply write it as n+2 into n+1 and then into n factorial, which is equal to 2550 into n factorial. We can cancel out n factorial from each side, and after that we have n+2 into n+1 and this 2550. Yeah, तो अब इसको किस चीज से एक्सप्रेस करना है? इसको ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करना है 2550 की दोनों, मतलब कि ये एक प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो। ओके, तो वो क्या हो सकता है? हम्म n+2 n+1। अगर हम लोग 51 into 50 करें तो 2550 आता है। आता है। सो इम्प्लाइज n+2 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ओके, एंड n+1 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये चीज मैंने कैसे लिखा? बाय कंपेयरिंग, है ना? कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग। सो सो एन किसी से भी लेंगे तो एन क्या हो जाएगा हमारे पास? 49 हो जाएगा। ओके, एन क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसी तरह और एक क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं और मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, इंस्टा पे बता सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। लाइक क्वेश्चन है n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ओके, फाइंड एन। तो ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं। एंड मैं एक अलग क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक इफ n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो या यहाँ पर बोल रहा है कि n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल आर इन द 2:1, आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको निकालते हैं, ये भी बहुत इजी है। लाइक वी हैव n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल is 2, n factorial by 4 factorial n-4 factorial equal to 2:1। ठीक है, 2:1, and we can write it as n factorial 2 factorial n-2 factorial into, ये उल्टा हो जाता है, n factorial
दिस इज 2:1। ओके, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर। या सो एन फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। ठीक है, implies 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल n-2 n-3 2/1। Okay, we can cancel out 2 from each side, and we have n-2 n-3. After calculating, we have equal to 6. Okay, so we can write it as n-2 n-3 equal to 3 into 2, n-2 equal to 3, and n-3 equal to 2 implies n equal to 5। या तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 2n by n equal to 1 into 3 into 5 2n-1 n-3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, या प्रूव दैट 2n by n equal to 135 2n-1 to the power n। ओके, सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, 2n by n। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 into 3 and so on, 2n-2 2n-1 and 2n, ये होगा by n होगा। ठीक है, इक्वल टू 1 into 3 into 5 into 7 so on, 2n-1 ऑड वाले को अलग कर दिए, एंड 2 into 4 into 6 into 8 एंड 2n-2 2n इवन वाले को अलग कर दिए। ओके, भाई हमारे पास जो था डिनोमिनेटर में, वो दिस इज एन फैक्टोरियल था। ठीक है, 1 into 3 into 5 into 7 2n-1। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 2n टर्म है, मतलब n टर्म है, तो यहाँ पर n
1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन, n-1 n। ठीक है, ठीक है। हम लोग को ये चीज प्रूव करना है ना। ओ, हो तो गया। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल भी है ना, n फैक्टोरियल है, बिल्कुल हो गया है। So we can simply write it as 1 into 3 into 5 into 7 and so on, 2n minus 1 and then 2n, and then we have n factorial by n factorial. We can cancel out n factorial from numerator and denominator, and what we left is 1 into 3 into 5 into 7, so on, 2n minus 1 to the power n. This is what we have to show. Okay, ये हम लोग को शो करना था। तो होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट को कमेंट कीजिए। एंड आपको अगर पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है ना, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, जो भी है, एंड मैथमेटिक्स से कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टा पे जुड़ सकते हो मुझसे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, @ IRSHAD तो आप मुझसे यहाँ पर डीएम करके आपके जो भी सवाल है वो सब आप पूछ सकते हो। ओके, या तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू बी विथ मी टिल हियर। बाय।